Hello, and once again, welcome to the third day of our 9-day program. Welcome, Sister Subhadra. So, before proceeding further, let us revise and in the meanwhile, clear your doubts. Because I had put a lot of advanced things which most of the seniors, even class 12 students, they fumble, they fail unless you have a proper knowledge of all these things, including the chemical bond structures of different molecules and ions, which you will be studying very soon in your programs. So let me share my screen. And of course, let me stop annotation. Go to another date. So this is the third day. Yes, I need you to ask questions, Mr. Prabhu. Should I open the oxidation number file? Prabhu? প্রভু তোমার ভয়েস শুভুনি মতো Yes, sir. You are saying some doubts you had, right? Yes, sir. What's Oxidation number of nickel carbon monoxide whole 4. Okay. ଯାହାର ଯାହା doubts ଅଛି you must ask. ନହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା? Yes, sir. Now carbon monoxide is a neutral molecule. So when all the 4 carbon dioxide themselves are neutral and the net charge of this complex is 0, there is no +2 or -2, nothing, means it is 0. There is no net charge of the complex. I told you these are complex. Very fortunately, this is not an ion. Most of the complexes are in ionic form, either positive or negative. But this is a neutral complex. But in a complex, there will be a metal as well as some ligands containing non-metals. Ligands which are connected to the central metal in the periphery. In the periphery, there will be 4 carbon monoxide, at the corners of a tetrahedron. You will be knowing that later. And nickel will be sitting at the center. And nickel, therefore, has to acquire 0 charge, has to have an oxidation state of 0. Welcome those who are watching from the YouTube. Arman, welcome. So এটা 0 বুঝিপারল তো অনসু? Yes, sir. Yes, sir. এটা 0 নিকেল কাহিଁକି 0 ହେଲା? You got it? Yes, sir. Sir, it does not have, the other part does not have a charge. So Yeah. Carbon monoxide is neutral, so nickel has to be neutral. Prabhu, got it?
Yes, sir. Any more? Sir, NaCN. NaCN. Again. N. Yes, either, let me tell you one thing, interesting thing, that whether you are taking a neutral substance, say nitric acid, whatever will be the oxidation number of nitrogen in nitric acid, plus 1 plus x minus 6 is equal to 0. So x is equal to plus 5. Same will be the oxidation number of nitrogen in nitrate ion, because nitrate ion has been produced from nitric acid by losing a proton. So here that was making 0 and here it will be making minus 1. So x minus 6 is equal to minus 1. So x is equal to plus 5. Therefore, in most cases, to simplify the calculation of oxidation number in difficult molecules, we split them into positive and negative ions. Don't bother about their coefficients. Bi2, CO3, whole 3. So all these things, simply take carbonate ion, I'm talking of, just. So the oxidation number of carbon in carbonic acid, sodium carbonate, potassium carbonate, lithium carbonate, or whatever carbonate, bismuth carbonate will be same, because the ion is carbonate ion. Because the stoichiometry, their charge relationship, valence relationship, somewhere 2, 3, somewhere 1, 1, somewhere 1, 2, that is different. Similarly, in NaCN, you can go for HCN or Cn minus. In HCN, let me tell you the corresponding acid, that will be easier to understand. You do not know the structure. You will be knowing the structure in some time. Don't worry at all. So carbon, I told you, is 2.2, this is 2.4, this is 3, around. So when there will be fighting, ninja fighting, then this will lose. But carbon will lose to nitrogen. So here plus 3, here minus 1. It will gain minus 1, lose plus 3. So the net charge, that the net effect charge that carbon will carry will be plus 2. Same thing will happen here in cyanide ion. This is the situation. Already minus 1 is there. Somebody has lost, say a hydrogen has lost, gone as proton, leaving behind its own electron. So minus charge is already there. And there will be loss of 3. So minus 1 plus 3, so it will be plus 2. You understood? Yes, sir. Any other? Feel free. It is for you. The program is for you. You find that this is the third day, but even the participants in Zoom is so thin. Uh, our work is not meant for shortcut guys or those who want success in a shortcut manner, don't have patience, don't have that, intellect to pursue. Definitely hard work is required. It's a 9-day program, and my plan is to take you to the end of something so that you can solve problems on stoichiometry involving solutions, polarity, molality, and all that. Those are very simple things once you understand. Sister, your two boys are missing. What has happened? Is there any program at school? They have participated, Sibdat and Sarthak, and so also Anisha. Sister, No, sir. this is not good.
This is not good. To be unpunctual is 50% failure. To be punctual, 50% success. I told you in the beginning. And once, yes, anything more? How gone ଅଛି? Sir, AS2S5. AS2. ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ମି ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଫାଇଲରେ ଭୁଲଟା ଥିଲା have I corrected or not? ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଫାଇଲଟା ନାଇଁ ସେଟା ଦେଇନି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ନାଇଁ ସେଟା ଦେଇନି ଓକେ AS2S5 Yes, sir. this is normal sulfide. Your question I think is yesterday you told Na2S5 where S5 belongs to polysulfide category where sulfur enjoys an average oxidation state of -2 by 5, but here I am saying it is a normal sulfide. Why? Because arsenic you have to consider has two oxidation states, +3 and +5. You'll know because of its electronic configuration, like nitrogen, it has, in S 2 electrons and in P 3 electrons. So total 5 electrons. So if all the fives will be utilized, then it can show an oxidation state of +5. Maximum oxidation state of arsenic, antimony, phosphorus, all these will be +5. So there are two arsenic. Therefore, the guess would be since arsenic can go up to +5, so you consider this as a normal sulfide. So 2x minus 10 is equal to 0, x is equal to +5. If you are asked to find arsenic. If you are asked to find sulfur, then it is -2. And I understand that you will be facing, you would be facing this apprehension. Am I correct? Yes, sir. ଏବେ ବୁଝିଲ? Yes, sir. તમે ગેસ કરી દો સોડિયમ ઇઝ નોટ हैविंग एनी वेरिएबल वैलेंसी +1 के सिवाय और कुछ भी वैलेंसी नहीं है लेकिन आर्सेनिक +3 से खाता शुरू होता है +3 +5 सो इसीलिए आपको लगेगा ये पॉलीसल्फाइड वाला सल्फाइड नहीं है ये नॉर्मल सल्फाइड है नेक्स्ट Sir, D-glucose structure. हाँ D-glucose structure well oxidation. well to find oxidation number of carbon atoms in organic molecules is a fun. They are not used much. Organic reactions have a different approach to study the reactions. These are for inorganic, but you can find, the the way I am arranging is not needed now. This is a particular configuration we'll be knowing later. Why not the other way? You can do it other way. It will be it will not be called glucose. It will be called mannose and sometimes galactose. It's some idose in some cases glucose. There are 8 different diastereomers and its pair. Everyone has a pair, an enantiomeric pair. You'll know all these things later. But our job is to find the oxidation number for fun.
a carbon. It will lose 2 to oxygen, gain 1 from hydrogen, and 2 to J mu to say nothing. So -2, sorry, +2 -1 +1. এটা লিখেছি না নেই +1 আনসার রে Yes, sir. বুঝল and let us take this carbon. It will gain 1, lose 1, and এপটে মু তো জিয়ে তু তো সি এপটে भी ସେଇଆ 0. এপটে gain 1, lose 1 0. এপটে gain 1, lose 1 0. এপটে gain 1, lose 1 0. এইটি কেবল এটি gain 2 and lose 1. So -2 plus 1 will be -1. ତେଣୁ ଉପରଟା +1 ତଳଟା -1 ବାକି ତକ ସବୁ 0 and therefore +1 -1 ଆଉ ସବୁ 0 by 6 ଯାହା ବି ହେଲେ ବି 6 କାର୍ବନ ଭିତରେ ହେଲେ ବି ସେ 0 ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି x ମେଥଡରେ ପକେଇବ ଗ୍ଲୁକୋଜ 6x plus 12 is equal to 0. Sorry, plus 12 minus 12 is equal to 0. Sir, first +1 କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ? କୋଉଟା Sir, first +1 କେମିତି ହେଲା ଟିକେ କହିବେ ଆଉ ଥରେ? କହୁଛି এইটা যদি তুমি ফর্মুলা x মেথড পকাইব 6x plus 12 minus 12 0 ହେଲେ x is equal to 0 কার্বনର 0 পাইব কিন্তু প্রকৃତରେ চারিটা কার্বনର 0 গোটাଏ +1 গোটাଏ -1 এনিওয়ে ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁମାନକୁ ବୁଝଉଛି ଏ କାର୍ବନଟା କେମିତି +1 ହେଲା ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ଇଜ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି କାର୍ବନର ଦିଟା ଅଛି oxygen তার electron পাইলে this nothing will happen but it will gain oxygen টা -2 হবো we are not bothered about oxygen carbon will lose 2 electrons so it will be acquiring +2 on the direction of oxygen but in the direction of hydrogen it will gain 1 because this is less electronegative this is more electronegative gain 1 means -1 so +2 -1 so the net charge will be +1. Because from the other side, carbon side, there will be no loss or no gain. So the net charge is +1. You got it? Yes, sir. Same in similar manner, you can explain why this carbon is -1 because it will gain 2 extra electrons from 2 hydrogen, so -2, and it will lose 1 electron. Its own electron with only 1, so +1. So the net charge is -1. Any other doubt? Mr. No, sir. Prabhu? No, sir. Sir, এটা খালি ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ paradoxical case ରୁ sir exam ରେ କେମିତି କେ question ଆସୁଛି ମାନେ average ପଚାରୁଛି ନା each atom ର oxidation number ପଚାରି Well, let me tell you how you will face in competitive tests. What I am talking of is not for your board examination. It is for competitive tests like NEET or JEE or similar. Supposing you will say in thiosulfide ion, the oxidation state of sulfur A only +2, B only +4, C both +4 and 0, D only 0. কোটা আনসার দেব C option কোটা A B C D ରୁ কোটা C option C average ହେଲା +2 ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନଥିବେ ସେମାନେ +2 ଲେଖିଦେବେ x ମେଥଡରେ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ସଲଫର ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ each sulfur has a similar environment with the other sulfur or they have different environments. So if the environment changes, their oxidation number also changes. Similarly, যদি কি কহিব CrO5, the oxidation number of chromium A +10 +10, B +5, C +6, D both +10 and +6 ଏମିତି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ କଣ କହିବ +6
हाँ तो जे न जानी स्ट्रक्चर मु तो जिते प्रकार एनोमालीज अच्छी मु कहि सारिछि हार्डली यदि को you will encounter with a similar situation very rarely you will encounter more than what I have said. I have gathered as many such paradoxical cases as possible. So with this you have enlightened yourself, broadened your horizon, your knowledge, so that you can access. And after you are discussed the chemical bond, it will be even much easier to distinguish between a normal case and a paradoxical case. For example, N2O. Tell me what is the oxidation number. You were asked in a just like in a board examination, you are asked. Your answer should be average because it will not be a multiple choice. Nowadays, multiple choice questions are coming in the board, but I doubt whether they will go up to this level. If they go, then it will be well and good. They are indirectly preparing for competitive tests. प्रिया आशा कौन रखुଛି Sir, out it out. Hmm? Sir, in KO2, oxidation number of oxygen -1/2 chemical. अरे N2 मोर उत्तर दियो तमे मते पचारलेनी. You answer my question. N2 रे केते बाहरला नाइट्रोजन रो अंशु ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। केते केते Sir, अंशु are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. ताले नाइट्रोजन रो केते in N2O laughing gas. Hari? Sir, +1. Yeah. I said that you, unless I tell you the bond structure, you cannot tell me. You are suspecting here दीटा नाइट्रोजन अछि ये केबे ये ही नथिबो ये केबे समान ही नथिबो सेति पे तुमे टिके पछे जाउछो. I understand, but मु कहली एवरेज बार करो. But actually if you look to the structure you will find something different. It would a formal charge अछि. You forget about the formal charge, a dative bond, it's a coordinate covalent bond. You forget about it. ये formal charge को मारो गोली. वर्तमान को ए नाइट्रोजन रखते ए नाइट्रोजन रखते first nitrogen 0, second nitrogen +2. Yes, because एठी किछि हबो नहीं. एठी दीटा तक इलेक्ट्रॉन दबो. हाँ एठी टिके जानिबा पड़िबो जे एई जो प्लस माइनस लिखा है नि सेटा छोटो पिलांक पई 10th क्लास पिलांक पई एक्चुअली एटा डेटिव बॉन्ड दीटा जाक नाइट्रोजन रो सेति पे तो ऑक्सीजन रो तीनटा लोन पे आसला एमती. But in class 11, when you study bonding, you will be told that this arrow mark is a misnomer. So in what we do, the donor will get a formal positive charge and the acceptor will get a formal negative charge. या माने तुम एटा arrow mark ए दीटा को इलेक्ट्रॉन कहारो ना नाइट्रोजन रो लोन पेयर नाही आ भलिया तेणु ये दीटा को इलेक्ट्रॉन ये नहीं जीवो ये नाइट्रोजन रो तेणु यार हम +2 एवं यार 0. सो एवरेज +2 +0/2 हेला को +1 आस. तुम भावनी ये +2 ये +1 मिसिक +3 हो गला. नो 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 ये गोटे फॉर्मल चार्ज
এটা dative bond ର representation of a dative bond arrow mark sign ଆଉ ଦିଆଯାଏନି ଯିଏ donor ସେ positive ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ସେ ନେଗେଟିଭ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ହେଲା ଇଏ ତ ତୁ ତ ଯିଏ ମୁଁ ତ ସିଏ ସେ ଇଏ ଜିରୋ ଏପଟ ସାଇଡରୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇପଟ ସାଇଡରୁ ଦିଟା ହରେଇଲା so that's why the average is +1 got it Yes, sir. any other question I would be very glad if you ask me questions of any you know related question Sir, in KO2, the oxidation number of oxygen is -1/2. yeah Sir, ଏଠି oxygen ର ଏଇଟା ସୁପର ଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା -1। okay guys those who are watching YouTube from the YouTube good morning to you and can you hear our voice just write in the chat box can you also hear someone asking me questions can you hear his or her voice just write down in chat box those who are watching directly from the YouTube yes this is superoxide ion KO2 or NaO2 KO2 so this is O2 single minus therefore since oxidation number always is determined for one atom for a single atom so it will be 2x is equal to -1 x is equal to -half so you perhaps want to know what will be the case of each oxygen how each oxygen will be having a fractional bond -half -half so it becomes -1 so far we could know that in the bond structure when we open it it is giving either 0 or +1 +2 -1 -2 or integers not fraction here we are getting fraction that is your main concern am I correct Mr. Sarathi Yes, sir. it's good thinking. But superoxide ion is something very special kind. So its bond structure cannot be explained by normal Lewis theory that we use this to explain this. It is completely belonging to a different theory that is called molecular orbital theory. So what we say -half is just an average, a bookkeeping tool to monitor how the oxidation number is changing. Otherwise, it carries little significance. You understand? So the -1 charge is shared between two atoms. So therefore, the average is coming -half. The two atoms doesn't have a kind of normal bond. A normal bond, two electron bond doesn't carry. The normal VSEPR theory, the Lewis theory all fail to explain the bonding of O2 minus. A molecular orbital theory will explain it. So in this case, you need not bother to say how a single atom can have a fractional oxidation number. That's just an average. Any other question? No, sir. Okay, let us start today. Before we start, let me ask you something. Let me tell you, this is a solid. All inorganic acids are soluble. This all chloride, bromide, iodides are soluble, excepting silver, mercurous, and lead. And since this is lead is there, it is a solid. This is a liquid. This is liquid.
Okay. So I underline the atom whose oxidation number you need to determine. Lead here and here, bromine here and here. And tell me, have they undergone changes? Is the oxidation number of lead has undergone any change? And if so, what? Decreased or increased? Bromine increased or decreased or has remained the same? Just find out by X method, you find out. Prabhu has raised his hand. Shivdat Babu ଲେଖୁଛନ୍ତି, due to my poor health, I am unable to join today's session. ଯାହା better late than never. ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଇଏ। ଓକେ, ଆଉ ତ କେହି ହାତ ଟେକିଲନି। ଅଂଶୁ, ଆଚ୍ଛା, ଲେଡ୍ର କହିଲ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି କେତେ ସେଠି କେତେ? ପ୍ରଭୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ +4 ସେଠି +2 ଏଠି +4 ଏଠି +2 ଠିକ କହୁଛି? ଅଂଶୁ, ଅରମାନ ଠିକ କହୁଛି ସେ? ପଦ୍ମେଶ Yes, ବାହାରେ sir. X ମେଥଡରେ କର, ଠିକ ଅଛି? Yes, sir. ବାହାରେ X ମେଥଡରେ କର। X ଏଇଟା ତମେ ଭାବନି ଏଇଟା ପେରୋକ୍ସାଇଡ ହେଇଥିବ। ପେରୋକ୍ସାଇଡ କେମିତି ଗେସ୍ କରିବ ଏଇଟା ପେରୋକ୍ସାଇଡ ନୁହେଁ? is simple that lead can go up to +4. lead ର ଦିଟା ପ୍ଲମ୍ବସ୍ ପ୍ଲମ୍ବିକ, lead 2 and lead 4 ଯଦି ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଅକ୍ସାଇଡ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ। ଯଦି ସେଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବେରିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, barium cannot go to +4, it is always +2. So this is peroxide. So you can guess 100% correct prediction you can have. This is not lead 2 peroxide, it is lead 4 oxide, normal oxide. So, and this is +2 here. Why +2? Because either you go for X method or you can go for the rule monovalent mono atomic radical, monoatomic ion. So this lead, its valency is 2, therefore is +2. Or you can go for X -2 is equal to 0. So this will be very funny. So once you know that the formula is BBBr2 because lead is +2, so simply write +2. No need to go for X method. So this has been a decrease. So decrease in oxidation number is called reduction. R. I will tell you much more clearly and in an elaborate manner soon. What about bromine? ପଦ୍ମେଶ କହିଲ, ପଦ୍ମେଶ ବ୍ରୋମିନ ର କ'ଣ ଘଟିଛି? କେତେରୁ କେତେକୁ ଯାଇଛି? सर फास्ट जो HBr ब्रोमीन रो तार जो ब्रोमीन टा होची -1. Very good. It is a negative radical, monoatomic negative ion, so it is -1.
or x method रे कले एटा +1 plus x is equal to 0 जा कले भी हबो and एटी पद्मेश्वर सर जो Br2 ब्रोमीन होची सर 0 yes rule number 1 elementary state रे रहिले O2 हो O3 हो S4 हो P4 हो elementary state रे तू तो जे मु तो से 0 so -1 ରୁ 0 को बढ़ी -1 टा कम 0 टा अधिक so this increase in oxidation number is called oxidation ताको हमें O लिखिबा so let us have a definition of oxidation in two ways. The main definition is loss of electron or same as supposing it is not an ionic reaction, it is a covalent reaction. How to know? Covalent molecules will have a fake charge to monitor. That fake charge, Anil sir, namaskar. That fake charge is oxidation number. So, or increase in oxidation number. Same thing. -1, that means one thonto was there, beak was there, and that thonto get cut. So that is 0. So loss of electron hela ki nahi. Thonto got the beak, the chonch is dechonchified. So it will be 0. So, and reduction is its opposite. It is gain of electron is the main definition, or decrease in oxidation number. Now see, here it was +4 and now in the right side it is +2. So there was 4 gatos, +4 माने 4टा गात थिला and वर्तमान एठी 2टा गात अछि आउ 2टा गात पूर्ण होई जाई छी. These 2 gatos have been filled up by electron by gaining electron. So electron gain कहबा जहा oxidation number decrease कहबा से the decrease in oxidation number is synonymous to gain of electron. Gain of electron you can visualize in ionic reaction. For example, तुम्हें देखिबो जिंक संगरे HCl दबो हबो ZnCl2 plus H2 hydrogen displacement reaction because zinc is above hydrogen in the activity series. So zinc थिला केते 0 रे एटा compound state रे zinc तो कभी 0 ही परिबनी तार oxidation number को पळेबो तो find the oxidation number. It is 0, it is +2. So 0 ରୁ +2 को गला. This is oxidation. Increase in oxidation number is oxidation और किछि गात नथिला कि थट नथिला एटी 2टा गात हला. Loss of electron हला. एटा को मध्ये जदि ionic equation लिखिबो, you know, chloride ions will be cancelled because chloride ions are spectators. They don't have any role to play. So zinc plus H plus gives rise to Zn2 plus H2. And you can balance it very easily too. So what has happened? Zinc has undergone oxidation to Zn2 plus by losing 2 electrons. So the loss of 2 electron is same as increase in oxidation number from 0 to +2. But here it is a real charge. It's an ionic compound. But in covalent compound, you don't find real charge. You will find fake charge called oxidation number. And that is a very important bookkeeping tool, dependable tool to monitor whether it is oxidation or reduction. And similarly, hydrogen has undergone a reduction. It is +1, it is 0. So that has happened by gain of electron. This is the reduction. And we can write down similar equation H plus 1 electron gives H, but hydrogen atom is unstable. It needs 2 hydrogen to become H2 stable gas. So 2 kardele, eti H2 karde paribo. And you can add up the 2 ionic
this is the oxidation part, this is the reduction part. And you can add, so 2e get cancelled. Sometimes electron cannot be cancelled unless and otherwise you manipulate in an algebraic manner. Supposing 83 achi, 82 achi, so 83 रे गुणिब तार लॉस आगो 6 से 6 हवा पे 83 रे गुणिब 83 रे गुणिब, so that the LCM is 3 2s are 6, so 83 रे गुणिब 82 रे 83 रे गुणिब 82 रे गुणिब कि जहाँ भी 83 थी धर 82 थी 82 रे गुणिब 83, so that 6 electron will cancel, 8 भी तो 8 आई जाइथिबो 2 2 80 तो 3 3 ए 6 आ गई जाइथिबो। तो एठी हमको 2e पड़ला आराम रे काट देले, so the net ionic equation, balanced ionic equation is this, which we had already done by heat and trial method. So this is the actual game, ionic game. Zinc is a solid, is no charge, but here zinc is an ion having two gathas, two cavities. And here hydrogen ion has one cavity, gatha, but here there is nothing. It is neutral hydrogen gas. You got it? Sir. आ गोटे तुमे बर्तमान मते करिके देखाओ कोटा ऑक्सीडाइज कोटा रिड्यूस। अच्छा, बाय द वे लेट मी टेल यू दैट द वन व्हिच इज ए केस टाकू पळे आछी, द वन which is itself reduced is called oxidant or oxidizing agent. Nowadays it's called oxidant or oxidizer. Agent फेजेंट आजकल तो LIC एजेंट बुल्लेनी सबू सबू बेपार एजेंट अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग और SI एजेंट OA और ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजर जी अन्य को ऑक्सीडाइज करे, जी अन्य को ऑक्सीडाइज करे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, से एते लूज करिवो इलेक्ट्रॉन जण तो के नेले से ऑक्सीडाइज हबो ते नबो ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड बाय नेता साजिक्री नेता एंड जोटा निजे ऑक्सीडाइज हे गला सेटा कहते रिड्यूसिंग एजेंट RA और रिडक्टेंट और रिड्यूसर और एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ये कहीं रिड्यूसिंग एजेंट ना आपको ये रिड्यूस करिवार साहाय्य कला बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट फिल्स अप द कैविटी, गात को बुझीबारे साहाय्य कला, रिड्यूस हबारे साहाय्य कला बोली या ना होची रिडक्टेंट या ना होची ऑक्सीडेंट। ये आपको ऑक्सीडाइज करिवारे साहाय्य कला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करिवारे साहाय्य कला बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एंड ये आपको रिड्यूस हबारे साहाय्य कला बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड, reducing agent is itself oxidized. OA is itself reduced. RA is itself oxidized. मु गोटे छोट रिएक्शन देवी आयोनिक जोटा एक्यूएस रे हबो, तुमे मते कहि दबो कोन घटिछ। Although copper, which lies below hydrogen in the activity series, cannot displace hydrogen, but it will react with concentrated, this has to be concentrated sulfuric acid on heating,
to produce a different gas, SO2. This is a redox reaction, not a hydrogen displacement reaction. Copper can react with sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, to give a different sets of products. You need to do two things. First, in this equation, you identify those which have undergone, those elements which have undergone changes. तुमको लागिबो, तुमको फील लागिबो जे एई एलिमेंट चेंज हेछि, कारण प्रथम इंस्पेक्शन होछि गोटे पटे से एलिमेंटरी स्टेट रे थिबो, आरो पटे कंपाउंड स्टेट रे थिबो, एंड दैट इज वन कल्प्रिट. चोर गोटे धरा पड़ीगला, आ गोटे चोर धीरे धीरे तुमको एक्सपीरियंस जना पड़ीजिवो, गेस मारू मारू धर जना पड़ीजिवो, एमती गुडे करदेले जना पड़ीजिवो. हु कैन टेल मी व्हिच इज द अदर कल्प्रिट? गोटे हला कॉपर, आ गोटे किए कहि परिबो? सल्फर. यस. केमि जानलो? केमिति गेस केमिति कलो? व्हाट इज योर द लॉजिक ऑफ योर गेस? ମୁଁ ସବୁର ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ବାହାର କରିଦେଲି. ओ एठी आगुरु अनेक थर आमे सल्फ्यूरिक एसिड रे करछे, एटा +6. एठी जणा पड़ी जाउची बाय ओरल कैलकुलेशन, एठी जणा पड़ची +4. तेणु सल्फर रो चेंज हेइची, तेणु धरा पड़ी गला गोटे तो कॉपर जणा पड़ला, एठी अनकम्बाइंड स्टेट रो अछि, एठी कंबाइंड स्टेट रो अछि. ये आ ये बार करो, कुह मते केते रु केते को जाईची, कोउटा से गोटे तीर चिन्ह देकरी गोटे आरो मार्क देकरी से प्रोसेसटा कोन, कोउटा ओ कोउटा आर प्रोसेस, एंड कोउटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोउटा रिड्यूसिंग एजेंट मते को. प्रभु हो गला. सर अब कहीं की का रही नहीं. कॉपर केते रु केते गला? 0 to +2. 0 एटी थिला अनकम्बाइंड स्टेट रे. एठी तुम एक्स मेथड रे करी किछ लाभ नै, एटा नॉर्मल मोनोएटॉमिक आयनटा, एटा +2 एटा -2 बोली कॉपर सल्फेट इज फॉर्मुलाइज CuSO4. और एल्स तुम करिबो एक्स एंटायर सल्फेट को -2 नबो, होल आयन को -2 नेकी 0 करिवो, नने पुणी तुम पेनी वाइज पाउंड फुली से सल्फर केम जानलो केते, पुणी प्लस ताकू बाहर करिया पड़ियो सल्फर 2 - x केते, x -8 इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल +6. तेणु नाको को एमिति न चुई एमिति चुईबो सल्फर रो +6, ऑक्सीजन -2 हिसाब रे -8 प्लस x इज इक्वल टू 0. कोन दरकार? एक रे तो एठी मोनोएटॉमिक आयनटा, दुई रे जदि नबो सल्फेट टाको होल -2 नियो, सो कॉपरटा +2 स्टेट को जाईची. सो दिस एई प्रोसेसटा कोन? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टा कोन? ऑक्सीडेशन. एठी लिखिबो O, एमिति गोटे कनेक्टिंग मार्क, आरो मार्क दबो, आरो मार्क तो नुहे कनेक्टिंग लाइन, सो दे लाइन ऊपर लिखिबो O, जोटा ऑक्सीडाइज होला, जोटा बढ़िला प्रोसेस्ड ऑक्सीडेशन. बट इमीडिएटली कॉपर तळे सेटा की एजेंट, अरे जोटा ऑक्सीडाइज्ड होला सेटा की एजेंट? रिडक्टेंट. रिडक्टेंट. अरे आरे लिखि दबा, हम कहबा रिडक्टेंट बोली, और खाली आर लिखले भी चलिबो रिडक्टेंट, कारण आर टा एठी लिखुछ तो प्रोसेस टा को आर ओ लिखिछ तो, तेणु आर ए ओ ए लिखिबाटा सेफर. प्रोसेस टा किंतु ऑक्सीडेशन, किंतु एटा निजे आर एटा यूज करो, एजेंट बसे यूज करो, बट देयर शुड बी ए डिस्क्रिमिनेशन, आई मीन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू phenomena. One is a process, the other one is an agent. अच्छा, देन सल्फर केते केते चेंज होला किए कहि परिबो? यस अंशु कहलो.
Sir, it goes from +6 to +4. Fantastic. So this is a decrease in the connecting mark in the connecting mark and it is like a reduction. But immediately sulfuric acid tole likhibo OA. Here sulfuric acid as an agent as a whole acting as oxidizing agent or oxidant or oxidizer. ତା ଭିତରେ ଅସଲ ହିରୋ ହେଉଛି ସଲଫର କିନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ କହୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜର. Now my next requirement is to convert it into the ionic form. Because it is an aqueous reaction, you have to show the real heroes and remove the spectators from the players. ପ୍ରଭୁ ସରିଲା? Yes, sir. ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ 10 days 9 day ଏଥରକ ହେଇପାରିଲି 10 day ଆରଥର କରିଥିଲି 9 day କଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ରବିବାରକୁ 31st month ସରୁଛି ତ 31st ରବିବାର ନ ୱେନସଡେକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ବଟ୍ we will try to restrict as we stipulated to 9 day. But let me tell you, এই ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କୋଉ ପିଲାକୁ ମୁଁ I can help guide in a sustained manner. Prabhu, you know that your senior batch student Swayamjit is with me in a regular way. I am helping him along with one guy from Puri. They are with me for the whole course. That, of course, once the periodic classification and periodic property discussion is held in such an extensive manner, so the study of individual group of elements in inorganic chemistry, I leave it to the students. I only pick those who are who want to be self-dependent, not dependent on spoon feeding much. They are also taking coaching from some sources, but they never ever miss my morning classes, which I enjoy to sit 1 hour. It is not 2 hours course, usually 1 hour kore, a regular program. 1 hour, 15 minutes maximum. So they are worried if I somehow suspend the class for some reason, at least 2 times, they are worried. They keep on coaxing me, sir, we are waiting for tomorrow's class. It's not that easy because you will be joining your school. School has an integrated coaching and you all, or else you are going to coaching somewhere. I used to say that if you are satisfied with the coaching that you are taking, then don't waste your time with me. You can ask your doubts whenever any doubt arises in chemistry from your coaching or from anything, or your some thing you want to know which is not being provided by your school, or you would interact with me. I am there. I am a student like you who will help you. Yeah, interestingly, Mr. Prabhu, I used to guide them remotely because we used to go minimum 4 months every year to our children in US, stay with them.
And during this stay, my work is same, like interacting with my students, teaching my students. खाली टाइम टा चेंज हो जाए, एटी मॉर्निंग सेटी मोर इवनिंग, वीक डेज रे और संडे सैटरडे संडे से माने इवनिंग रे दे मेक आउटिंग एंड आई वी यूज टू गो विथ देम. सो सेटा छाड़ दे बाकी सेटी भी करे किछि चेंज नहीं. इन एडिशन टू दैट आई आल्सो सेठी एठी जोटा ही पारेनी सेठी आई विजिट टू डिफरेंट लैबोरेटरीज nearby. I stay in California, in San Diego, so I used to visit uh, other university in California. When my friends are there, I used to interact with them. So it happens. କାହାର ସରିଲା ଏଥରକ ମୁଁ ପଚାରିବି କାହାକୁ ନା ଅଂଶୁକୁ. Yes, sir. So the net ionic equation would be Cu copper solid. Yes, solid. Plus H plus. Yes. Plus SO4 2 minus. Yes. Which gives rise to Cu2 plus. Yes. SO2 gas and H2 liquid. Oh, fantastic. ଏଇଟା ଆକ୍ ଲେଖିବା କଥା, ଆମେ ଲେଖୁନେ, ଏଇଟା ବି ଆକ୍ ଲେଖିବା କଥା. ଏ ଛାଡ଼ ଆଉ ସେ ଲେଖିବାନି. सर SO4 2 minus ସେଇଟା ସେଇ କଥା ତ ଇଏ କିଏ ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆୟନ ବା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ ଏପଟେ PbCl2 ବା MnCl2 ର ଯୋଉ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ ସେଇଟା ସ୍ପେକ୍ଟାଟର, ସିଏ କଟିବ. କିନ୍ତୁ out of the chloride ions, some of them have to stay as players to produce Cl2. तो राइट साइड रे सल्फेट आयन इज स्पेक्टाटर, ताको रखिबनी, रखिले खराब लागुनी. SO2 पर अछि गोटे सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस गोटे अछि, पुनी SO4 रहिबो रिपीट हो. एटा कोन रहिछि कपर सल्फेट रो जो सांग तार जो पार्टनर सल्फेट आयन तापे रहिछि, नो तापे रहिनी. जेतले मॉलिक्यूलर इक्वेशन बिल्ड अप करिवो सेतले एक्स्ट्रा सल्फेट आयन दबो यार पार्टनर पाई. एई सल्फेट ता केवल या पाई आ कहा पाई नुए. मिस्टर प्रभु बुझिलो. yes sir हे प्रभु. सो आपको आमे वेरी शॉर्टली बैलेंस करिबा, से टेक्निक आमे जानिबा. ओके, वेरी गुड. एटा बुझिलो पद्मेश, बुझिलो. आगे सर. अरमान. Yes. ये भौणी सुभद्रा, भौणी ढोळिलेणी कि भौणी. हाँ से ढोळिलेणी. ये दुकान खोली. No, sir. बुझिलो. Yes, sir. ନାଇଁ ସାର୍ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ତମେ. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍. ଏଥିରେ ଆକ୍ୟୁଅସ୍ ଫେଜ୍ରେ ହେଉନି. ତମେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ, ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍. ଗ୍ୟାସ୍ ନହେଲେ ବି ସଲିଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି. ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ସଲିଡ୍, କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ. ଖାଲି ୱାଟର ଭେପର ହେଇକି ପଳେଇବ ସେ. ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିଟିଂରେ ସିଏ ଜି ହେଇଯିବ ସେସବୁ. ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ. କିଛି ଜି ଫି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ what are the changes which is OA and which is RA and show the arrow mark. No ionic equation can be possible in this case.
এটা কোন হলদি পড়লে କେତେ ସେମିତି ଆରେ ବାବା ଏଥରକ ଅରମାନକୁ ପଚାରିବେ ଅରମାନ କହିଲ सर NH3 ରୁ N2 ଟା ଅକ୍ସିଡେସନ ଆରେ ହଉଛି କର ଆଉ ହଁ ହେଲା ଯେ ମତେ କୁହ ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର କେତେରୁ କେତେ ଗଲା सर N ର -3 ରୁ ଗଲା 0 କୁ। ନାଇଁ ଆମୋନିଆରେ -3 এটা ଆଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖା ହେବା କଥା H3N ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ଆଗ ଲେଖାଯିବା କଥା ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ପଛରେ ଲେଖା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲତି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛୁ ଆମୋନିଆକୁ NH3 ଲେଖୁଛେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ so nitrogen is -3 x plus 1 hydrogen is always +1 0 ହେଲେ x equal -3 so ଏଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ -3 ରୁ 0 କୁ ଗଲା this is oxidation ତିନିଟା ଥଣ୍ଟ କଟା ହେଲା it's a gain the loss of electron I'm sorry loss of electron so the process is oxidation and this is Ra and କିଏ କହିବ କପର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କପର ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ଏଠି ଅନକମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏଠି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କପରଟା ଏଠି ଅନକମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏଠି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ସୋ ଦୁଇଟା ଚୋର ଆପେ ଆପେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ରେ କପର +2 ଆଉ କପର ସେପଟେ 0 ୟେସ୍ +2 ରୁ 0 and this is a decrease the process is reduction and the moment something is reduced ମାନେ ସେଟା oxidizing agent OA got it ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟିଆ କରିବ yes sir ସ୍ଲାଇଟଲି କଷ୍ଟିଆ ସ୍ଲାଇଟଲି ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି କଷ୍ଟିଆ ନୁହଁ এইটার কিন্তু মোর দরকার আক্ୟୁଅସ୍ এটা ଆକ୍ୟୁଅସ୍ ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛି এইটা মোর ଦୁଇଟାକ ଦରକାର ଆଗ ଡିସାଇଡ୍ କର কোটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোটা রিডিউসিং এজেন্ট এগুলো सब ডিসাইড কর অক্সিডেশন নম্বর দেইকিরি খালি ডিসাইড কলে হবনি দেইকিরি এবং তীর চিহ্ন দেইকিরি কোটা ওএ কোটা আরএ ডিসাইড কর তারপরে মোর দরকার আয়নিক ইকুয়েশন ପ୍ରଭୁ ହାତ ଟେକିଲେଣି ଅରମାନ ହାତ ଟେକିଲେଣି ନା ଆଗ ସେଟଲ୍ କରିଦେବା ଆୟନିକ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପଛରେ ଆଗ ସେଟଲ୍ କରିଦେବା ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ OARA ସେଇଟା ଅନୁସୁ ସରିନି ତାପରେ ଆୟନିକ ଇକ୍ୱେସନ୍ ତମେ ଚଲଉଥା ଯୋଉମାନେ ହାତ ଟେକିଛ ସେମାନେ ଆୟନିକ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବି ଲେଖୁଥା ଲେଖି ସାରିଲେଣି ଅରମାନ नो सर ଲେଖୁଥା ହାତ ଟେକୁଛ କ'ଣ ସତରେ ହାତ ଟେକୁଛ ହାତ ଟେକାଟା ଥାଉ
आज गोटे किसी अच्छी तुम स्कूल भौणी कौन अनिशा मिस करने कथा नुह सार्थक करने कथा नुह ये गोटे मत लगुच सी ही इज टेकिंग ए प्ली ता देह ठीक अच्छे दिस इज माई फिलिंग इन मोर किसी असुविधा नहीं किंतु सत्य उपरे जदि आम चलवा अपन जीवन रे तो तुम आस्ते आस्ते बड़ छोट पिला अच्छ यू आर चाइल्ड नाउ ग्रो कर से तुम लाइफटा बहुत सुखमय हम और माँ अंशु कहीं देरी कर तुम तो बढ़िया पिला Sir, nitrogen is a little doubtful, so that's why I'm not being able to. ये एठी एक्स मेथड रे करो एवरेज बाहर करो तुम सेठी मुझे तो कहूली पैराडॉक्सिकल केसेस से भितर पड़ोनी एटा हूँ बुक कीपिंग कोटा केतरु गला एवरेज सब मल्टीपल जदि नाइट्रोजन अच्छे तुम भाव या भावुथ नाइट्रोजन दीटा अच्छी तो दी प्रकार सार कहते पुणी कौन करवा कौन लिखी मुझे लिखी +2 0 ना नहीं एवरेज +1 लिख एवरेज लिख +1 हाँ ये कहल प्रभु कहल क्विक जेडन होची 0 रू रू जेडन नाइट्रेट होची +2 जेडन प्लस कहीं जिंक नाइट्रेट एटा कंपाउंड जिंक रो गोटे वैलेंसी 2 बोली एटिके आस एक्स मेथड रे कले भी से बाहर किंतु एक्स मेथड रे कले लोक हसबे এটা পরে মনো আটমিক আয়নটা যদি করিব কর নাইট্রেট কু -1 ধরিବାକୁ পড়িବ পুଣି নাইଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେପାରେଟଲି করে ନାକକୁ ଏମିତି ନଚେଇକିରି ଏମିତି ଶୋଇ ସୋ x -2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ +2 এইটা কলে ବି ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ବୋକାଟା ବୋକା और ବୋକି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେ रिएक्शन सो एटा +2 को गला एंड दिस प्रोसेस इज कोन रिडक्शन आर यू किडिंग मी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़िवाटा कहती रिडक्शन ऑक्सीडेशन ताहले ए प्रोसेसटा हला ऑक्सीडेशन किंतु एटा जिंकटा को एजेंट सर रिडक्टेंट LIC एजेंट reducing agent and what about nitric acid nitrogen obviously the other culprit is nitrogen it जଣା पड़ जाउची एटी सेपरेट हो जाइची पूरा नाइट्रोजन टा एटी कंपाउंड माने कंपाउंड कहूची एटा गुटे एसिड अवस्था अछि एटी गुटे अलगा गैस बाहर जाइची तो सस्पिशन तुम सेठी की जीवो कारण नाइट्रेट आयन केबे नुए कारण नाइट्रिक एसिड रे नाइट्रोजन जतिकी नाइट्रेट आयन रे नाइट्रोजन सेतिकी सो नाइट्रेट एठी तमरो सस्पिशन जीवो नाही एटा हउच तम सस्पिशन टेल मी अरमान को अरमान नाइट्रोजन HNO3 रे नाइट्रोजन हला 5 5 ना +5 +5 यस और N2 रे नाइट्रोजन +1 यस 2x -2 इज इक्वल टू 0 हेले x इज इक्वल टू +1 सर तो एटा रिडक्शन यस +5 रु +1 कमिला तेणु एटा कमिबाटा प्रोसेसटा होची रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग यस कहला बेलू ऑक्सीडेंट कहि पारो किंतु OA लेख कारण O और R कंफ्यूजन हम जो प्रोसेस संगरे तो एजेंट पछे कुह LIC एजेंट की एजेंट पछे कुह हेला बुझियला पद्मेश आइए सर भौणी भौणी सोई जाउची टोटल सोउची अंशुलिमा बुझिल अंशु Yes, sir. Yes, sir. ओके एबे हमें देखिवा गोटे प्रकार जातीय रिएक्शन जो थरे की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जीए रिड्यूसिंग एजेंट सीए गोटे मॉलिक्यूल दिया हबो रिएक्शन हबो तार गोटे एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन हबो आ गोटे एलिमेंट रो रिडक्शन हबो तो सेठी एजेंट लेखा जाएनी सेही भलिया रिएक्शन रो अन्य ना अछि उसे नाटा परे कहबी सो फॉर एग्जांपल तमे पोटेशियम क्लोरेट
क्लोरेट ताको हिट करिवो सेतु बाहरिवो पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन तो बर्तमान देखिएला एथिरे मु कहिदेली ए भितरु पोटासियम क्लोराइड रो गोटे एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन हबो आ गोटे एलिमेंट रो रिडक्शन हबो एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन ऑटोमेटिकली गोटे चोर धरा पड़ला ऑक्सीजन द अदर वन ऑब्वियसली क्लोरीन एना पोटासियम रो केबे चेंज हुएनी इट पोटासियम हैज नो वेरिएबल वैलेंस इट इज ऑलवेज +1 तेणु चोर गोटे क्लोरीन गोटे ऑक्सीजन देखै दियो केतेरु केते गला केतेरु केते खसिला ओए आरे एठी देखाओनी कारण जीए ओए सेही आरे এই ভଳିଆ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रो ना अलगा আছে प्रभु हाथ टेकिलेनी हे प्रभु कौन में इतने समय लगुची एक्स मेथड रे करो अलगा जगह रे करो टिके पाखरे रफ स्पेस देखि करी बाहर करो आउ वेट करवानी प्रभु कहतु अच्छा पोटासियम क्लोराइड रे क्लोरीन +5 ଆଉ पोटासियम क्लोराइड रे क्लोरीन -1 प्रिसाइजली कारण देख पोटासियम +1 क्लोरीन धरो एक्स तीन ऑक्सीजन को -6 इक्वल टू 0 सो एक्स इज इक्वल टू +5 एंड एटा तो मोनो एटॉमिक रेडिकलटा पोटासियम क्लोराइड आपको कौन एक्स मेथड रे कले लोक हसिबे सो +5 रो -1 एटा कमिला रिडक्शन रिएक्शन पांचटा देख गात पूरण होकर आउ गोटे थंट है माने 6टा इलेक्ट्रॉन गेन कले जाइकरी 5टा गात पूरण हम +5 चार्ज न्यूट्रल हम पुणी -1 चार्ज हम सो एटा जो डिक्रीज कला ऑक्सीडेशन नंबर सो प्रोसेसटा कौन रिडक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कार हला सर ऑक्सीजन रो केते सर प्लस जो -6 रो ना -4 -6 ना 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 -6 कैलकुलेशन बेले -2 सबु बेले ऊपर मुंड ऊपर जो लिखिबो गोटे एटम पिछा फॉर ए सिंगल एटम यू हैव टू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करला को -6 हबो आज्ञा -2 रु सर एटा को 0 0 सो -2 रु 0 बढ़िला दीटा थंट कटा हला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हला दिस इज ऑक्सीडेशन एठी ओए आर किछि लिखिया दरकार नै एई भलिया रिएक्शन ना होची ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन बा सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन हाँ बाय द वे एगुडा रिएक्शन सब आम जो पढ़ीचे मूलर गोटे हेडिंग कर रिडॉक्स रिएक्शंस ये जो आरंभ कले यू आम जो आरंभ करदे ये जो आरंभ करदे ये गोटे हेडिंग कर ऑक्सीडेशन जो अच्छी रिडक्शन से अच्छी जड़े इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो आउ जड़े निश्चय गेन करिवो एमती किछि रिएक्शन नहीं जो खाली ऑक्सीडेशन होतुबो नो रिडक्शन और रिडक्शन हैपनिंग केमती करिवो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन केमती हम कि तो देले तेणु माने दे गो सिमल्टेनियसली टुगेदर हैंड इन हैंड तेणु से गोटे मिसिकी ना दिखाई रिडॉक्स रिएक्शन ताको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कले हम किंतु ताको शॉर्टकट रे कहते रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी अच्छी रिडक्शन भी अच्छी इलेक्ट्रॉन लॉस जड़े करुच्ची इलेक्ट्रॉन गेन जड़े करुच्ची ऑक्सीडेशन नंबर जनकर वृद्धि घटुची बा बढ़ुची आउ जनकर ह्रास घटुची बा कमुची एक का बढ़ता है दूसरे का घटता है एंड
এইটা যেহেতু সলিড ফেজ রিয়াকশনটা ইয়ে সলিড ইয়ে গ্যাস, তেণু এটা আক্ୟୁଅସ୍ ফেজ ନାହିଁ। তুমি তাকে খালি ব্যালেন্স কল ଦେଖିବା। ব্যালেন্সিং ইজ এ মস্ট। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ସହି ସହି ଫର୍ମୁଲା ରାଇଟିଂ ପରେ ଦେନ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିବି। କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରିବ? ଅଂଶୁଲିମା ବୁଝିଲ? Yes, sir. ଆଜି ତମ ମନ ଭଲ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ sir, ଠିକ ଭଲ ଅଛି। ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଅଂଶୁ କହିଲ? Sir, 2 KClO3 then 2 KCl plus 3 O2. ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ଏଇଆ ଭାବିଲ ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସମାନ କଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି 6 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି 2ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ 6 ହେବ, ଏଠି 3ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 6 ହେବ। ସো এটা କଲା ପରେ ଏଠି 2 ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ଏଠି 2 କଲା ମାନେ ସବୁ 2 ପୋଟାସିୟମ୍ 2 କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଇଗଲା। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଗଲା। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବତାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପୋଟାସିୟମ୍ ସମାନ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗୋଟେ ଏଠି 3ଟା ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି 3/2 କରିବି। 3/2 ଇଣ୍ଟୁ 2 2 କଟିଗଲା 3, ଏପଟେ ବି 3, ଏପଟେ ବି 3। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ 3/2 କଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ଅଲ୍ ଦି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ତାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆର ଏଲସିଏମ୍ ହେଉଛି 2। ସୋ 2ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟାକୁ, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ 2ଟା ହଟିବ। ସୋ ଏଠି ହେଇଗଲା 2 KClO3, ଏଠି ହେଲା 2 KCl, ଏଠି 2 2 କଟିଗଲା 3 O2। ନାଇଁ এইটা ମୁଁ କାହିଁକି ବତେଇଲି, ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେଇ ମେଥଡ଼ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ less time consuming than this method. এই মেথডটা এটি 3 ଅଛି, এটি 2 ଅଛି, यार লস আগু LCM ହେଲା 6, তেଣୁ এটি 2 এটি 3 କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ତମକୁ ଦଉଛି, ସେଇ ସେଲ୍ଫ ରିଡକ୍ସ ବା ଅଟୋ ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍, ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲ, ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। So when lead nitrate is heated, all solid phase, it is aqueous phase nahi. You get yellowish color PbO. These are a solid lekhuni. And a reddish brown gas NO2. And of course, you have oxygen gas. So there are 2 gases and 1 solid. Tome au lekhoni. This is a solid phase reaction. But test tube re lead nitrate nabo solid. Then taku heat karibo. Then there will be decrypitation, and after some time you will find reddish brown gas, ta bhitere luchikiri oxygen thibo, because oxygen is colorless and residue rahijibo gote yellowish color lead 2 oxide. So now I give you a challenge to you to find out the culprits. चोरो को धरिबो तुमे एवं कोउटा कोउठी केतेरु केतेकु जाइछि एवं कोउटा केतेरु बढिछि कमिछि तमे देखै। And then we will think of balancing it, and how logically and quickly you can balance this equation, that is to be discussed. प्रभु सरलानी सर वाह, आमे टिके समय नौ, तुमे एमती शीघ्र करदेले हबो कि आमको टिके समय दवा पड़िबो ना। हाथ टेके रखी था। गोटे तो चोर ऑक्सीजन अंश नुहे, कारण ऑक्सीजन सेठी अनकम्बाइंड स्टेट रे अछि, एलिमेंटरी एपटे कंबाइंड। आउ गोटे चोर को धरिया कथा। एठू जना पड़ीगला नाइट्रेट अछि NO3 माइनस से अलगा थिबो, NO2 गोटे न्यूट्रल गैस या निश्चय अलगा थिबो। सो नाइट्रोजन इज अनदर कल्प्रिट। धरा पड़ीगला लेड तो +2 अछि, एठी भी +2, सेठी भी +2। सो लेड इज नॉट ए कल्प्रिट।
प्रभु तुमर तुम तल बैच पिला किए तुमर चिन्ह अच्छी भल पिला तो सर एवरेज 80 ରୁ 90% ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ନା 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 90 नो नो रिजन नथिबे किछि नाही तांकर गोटे मु करूची 7 दिनिया सेई ऑनलाइन ये सर जून फर्स्ट वीक रे कि मे लास्ट वीक रे फाइनल हेनी सेटा फाइनल हबो मु आंको कहबिनी हमर ये मैडम को कोन तांगा ना कि पुष्पिता हां जी सर बुझंती म हमर यूरेनियम कथा जी बुझंती मैडम पुष्पिता मिस पुष्पिता मैडम को मु कहबिनी से पिला को नोटिफाई कर देबा ना मु कहूची बाय चांस तमर की अति क्लोज एक्वेंटेंस थिबो तो ताको मध्य तुमे होई परियो ये and this time I am including both CBSE and Odia. I will notify to all the CBSE schools also. कौन म अरे हे एथर पद्मेश को पचारिबा बाबा पद्मेश कहलो सर जो पीबीएनओ3 होल 2 रे सर पीबी रो होची ऑक्सीजन होची 2 सर जो हमरो नाइट्रोजन होची 5 अरे लेट जहार चेंज होची मते कुह कहार चेंज होची सर जो ऑक्सीजन सर चेंज होची -2 ରୁ 0 यस सेटा गोटे चेंज हला ऑक्सीजन -2 सबले गोटे एटम पिछा -2 इट इज 0 सो ये प्रोसेस टा हला ऑक्सीडेशन नो कि आया अच्छा रिडक्शन देखा सर जो नाइट्रोजन सर होची 5 ରୁ 4 5 कौन +5 कहबो ना सर माने +5 ରୁ +4 एटा एटा +5 रिडक्शन कारण तुम नाइट्रेट आयन अलगा कर दौन होल मलिक्यूल टा नेले बहुत समय लगे नाइट्रेट आयन कर दियो बिकॉज नाइट्रेट आयन रे जतिकी लेड नाइट्रेट सेतिकी x -6 इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू +5 तो नाइट्रिक एसिड हो लेड नाइट्रेट हो नाइट्रेट आयन हो +5 एटा तो न्यूट्रल गैस x -4 इज इक्वल टू 0 सो इट +4 सो +5 रो +4 कमिला एटा प्रोसेस रिडक्शन ए केस रे आउ काहाकू ओए एजेंट एठी केही नांती एटा सेल्फ रिडक्स रिएक्शन सेठी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने गोटे सब्सटेंस तो गोटे आम क्या कहवा तेणु ए दि ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट अच्छी रिड्यूस्ड एलिमेंट भी अच्छी से सेल्फ रिडक्स रिएक्शन कहते विच इज ए रिडक्स रिएक्शन बट ए डिफरेंट काइंड तार नेम अलग सेमती ताठू आहरी प्रिसाइजली कले देख मजा जिनस देख से एलिमेंट रु गोटे एलिमेंट ऑक्सीडाइज हम से एलिमेंट रु गोटे से एलिमेंट रु गोटे एटम ऑक्सीडाइज हम आ गोटे एटम रिड्यूस हम हे भाई दुबे को बैलेंस कलेनी ए छाड़ीबिनी मु तुमको बैलेंस कर अल्प पछे पढ़ व्हाट इज द लॉजिक एमती तो अंधार रे बाड़ी बुलेकरी मध्य करी हबो एटा तो एते डिफिकल्ट नुहे किंतु व्हाट इज द लॉजिक you will apply to balance this. हाँ हेगला बैलेंस अलसु अरमान भौणी सुभद्रा सोई पड़लनी हाँ जगन्नाथ बलभद्र पाखे जो सुभद्रा अच्छा दी भाई जदि प्रोटेक्शन सब बेले देले ताले भौणी शोला आ कौन मझे भौणी शोले अरमान कहल Sir, 2PbNO3 gives us 2PbO plus 4NO2 plus 4. केमी जान लो केमती मु तो जानी पारुनी केमी जान लो एमती हबो बिली व्हाट इज योर लॉजिक हाउ यू अप्रोच्ड यस प्रभु कहि परियो कि मु ऑक्सीजन को कंसीडर करके कली फर्स्ट हाँ ऑक्सीजन
छटा सेपटे ऑक्सीजन 5टा अछि तो 2 पीबीओ प्लस 2 मल्टीप्लाई कली लेड ऑक्साइड रे लेड ऑक्साइड रे टू मल्टीप्लाई कर दलो कोन पई ता ऑक्सीजन संख्या तो 12टा हो जिवो 3 दुणे 6 दुणे 12 हो जिवो नहीं सर एपटे लेड ऑक्साइड रे 2 मल्टीप्लाई कर तो 6 हो ना हाँ लेड ऑक्साइड रे 2 मल्टीप्लाई कले एटी 2 टू 4 टू 6 हला एटू तापरे एठी लेड 2 हे गला तो एपटे लेड नाइट्रेट ले भी 2 मल्टीप्लाई कली एटी भी 2 कर देलो अच्छा एटू वेरी गुड देन सर नाइट्रोजन 4 हे गला एपटे 4NO2 मल्टीप्लाई कर देली एटी 4 कर देलो वेरी गुड तारे तापर तो सर हे गला आपण यस सर तापर तो किछि करियो पडियो ना ऑलरेडी ऑक्सीजन ऑलरेडी हेई जाईची बैलेंस हाँ ये से कोन कला मु कहूची अंशु से प्रथमे हिट कला ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एपटे 6 अछि एपटे 2 2 1 3 2 5 अछि सो ताकू करिया पई से कोन कला ना एठी 2 कर देला काहे कि एठी 2 कर देला मु एठी 2 कर देले एठी अधिका हो जिवो एठी 2 कर देले अधिका हो जिवो तो एठी जो 1 अछि ताकू 2 कर देले से बर्तन 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन टाकू से आगो ठीक कर देला जेहेतु एठी 2 कला याकू भी 2 करियो पड़ियो लेड मध्ये दीटा हबो जेहेतु एठी 2 कला ऑक्सीजन संख्या एठी हेगला केते नाइट्रोजन संख्या आगो हेगला केते ना 4 एठी 2 अछि कोएफिशिएंट रे एठी 2 अछि सो एठी 4 कर देला 4 फल रे देखिला से जे ऑक्सीजन संख्या एटी 6 दुणे 3 दुणे 12 हेलानी सो एठी मध्य ए जो प्रोसेस रे कला से 4 टू जा 8 प्लस 2 10 से एक्चुअली प्रथमे ऑक्सीजन को समान करथिला 6 करिया पई ए करथिला किंतु देखल को ऑक्सीजन चेंज हे गेलानी एपटे 12 एपटे मध्य 12 से चेक कला एटी 4 टू जा 8 प्लस 2 10 2 12 तेणु छाड़ देला अरे ऑक्सीजन 6 टार आरंभ कर देले हाँ एबे 12 हेगला समान तो हेला इक्वेशन तो बैलेंस सब एलिमेंट तो इक्वलाइज हला छाड़ देला सो दिस इज वन वे नॉट बैड किंतु मु हितले कोन करथांती आ गुटे मेथड रे करथांती मु अप्रोच मु करथांती कोन ना लेड गुटे समान अछि नाइट्रोजन एटी दीटा अछि तेणु एटी फास्ट 2 कर दी थांती ऑक्सीजन 3 दुणे 6 अछि 2 मल्टीप्लाई कला परे 2 टू जा 4 1 5 हे गला तेणु एठी किंतु ऑक्सीजन अछि केते 6 एटी 6 एटी 5 आउ एटा हम समान कर दैछे नाइट्रोजन समान कर दैछे आकु चेंज करिवार नै एठी जहा करिवा एठी तेणु एठी हाफ करिवि तेणु हाफ इंटू 2 एटी 1 एटी 4 प्लस 1 तेणु एठी भी 6 एठी भी 6 किंतु मु कहिछि जे केबे भी फ्रैक्शन रहिबनी अल्टीमेटली तमे फ्रैक्शन हाफ टाकू रिमूव करिवा कहले 2 रे मल्टीप्लाई करिया पड़िबो 2 रे मल्टीप्लाई कर देले एटा हे जिवो 2 एटा हे जिवो 2 एटा हे जिवो 4 एटा हे जिवो हाफ टा कटि जिवो O2 सो जो मेथड रे लॉजिकली तमे करले जाय तमे हबो नहनी बेले बेले हरियाण रे पड़ी जिवो बुझियला अंशु बुझिलो Yes, sir. कोटा तुमको बेटर अप्रोच लागिला Sir, I'm more acquainted with the hit and trial method. So, ये भी तो हिट एंड ट्रायल but this one better. matlab, the other procedure is easier. But as I'm acquainted with the other one, I took the previous procedure first rather than the fractional one. Okay, anyone, all these are hit and trial. But even for hit and trial, you should approach in a logical manner because Yes. it contains a lot of molecules having these formula are not that difficult. But in some cases, formula are little stiff. So in that case, you have to go for a good inspection. Okay. Now I will tell you another type of reaction, say chlorine reacting सर with क्वेश्चन बेटा मिस कर देले कोड़ा सर जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड रा नेट आयनिक इक्वेशन सेटा रही गला मिस हे गला अरे हाँ रही गला देखिलो गुड 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 जिंक जो करथली सेटा सब हैला किंतु त नेट आयनिक इक्वेशन टा रही गला के करजो
डायरेक्टली मते कुह किए करछ अरमान आग हाथ देखिछि किंतु अंशु को पचारि हाँ Sir, zinc solid plus H plus NO3 minus. This gives rise to Zn2 plus aqueous, N2 gas, and H2 liquid. N2 पर देथिले आई एम सो सॉरी बट NO2 भूल रे कर देले no many gases will come depending on the concentration of nitric acid केतेबेले बहुत concentrated नेले NO2 moderately concentrated नेले NO dilute नेले N2O बेले बेले नाइट्रोजन गैस ही भारी आउरी डायल्यूट नेले अच्छी so depends on the concentration not that always NO2 भारी N2O एटा G plus what yes ये is the Arman Yes, sir. Say it. प्रभु Yes, sir. ये भौणी खसी गले अच्छा हाँ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉଥିରେ କି ଏକା ଏଲିମେଣ୍ଟ will be undergoing ଏଇଟା aqueous reaction ତମକୁ ମତେ ଇଏ ଇକ୍वेସନ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ এটা এক এক से ଜାଣିଛ सोडियम और सोडियम এটা ଗ୍ୟାସ୍ तो आग मत देखा कोठी ऑक्सीडाइज कोठा रिड्यूस सेही क्लोरीन टा ऑक्सीडाइज ହେଇଛି सेही क्लोरीन टा रिड्यूस ହେଇଛି यार गोटे डिफरेंट नेम इट्स नॉट ऑटो रिडॉक्स होची कोठा ना से गोटे कंपाउंड रे गोटे एलिमेंट ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट इज रिड्यूस्ड बट हियर द सेम एलिमेंट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड आल्सो रिड्यूस्ड Arman Prabhu have completed एटी OARA भी लिखा जाए नहीं खाली कोटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कोटा रिडक्शन प्रोसेस पद्मेश तुम तो भल पिला बाबा नई तुम तो आगुरी नथिल यूरानियम बैच रे माने ये नथिल फिर भी तुम करूच माने यू आर रियली गुड आई कैन स्मेल मते बासिलाणी यू गॉट अ वेरी गुड फ्यूचर नने कि सस्टेन करि परिबेनी हमर प्रोग्राम को उधेबा डिफिकल्ट हे जाय पिला देखुन यस अरमान कहलो Sir, Cl2 रे क्लोरीन 0 तापरे NaClO3 रे क्लोरीन होची +5 +3 प्रथमे कौन कहल सोडियम रो +1 क्लोरीन रो x -6 = 0 हेले x = +5 सो 0 रु +5 ए बढ़िला ए प्रोसेस टा ऑक्सीडेशन सेही 0 रु तापरे NaCl रे क्लोरीन हला -1 -1 सेही हां रिडक्शन यस सेही 0 रु गला -1 को अरे क्वाड का इटा रिडक्शन से क्लोरीन 0 रु +5 0 रु -1 एई भलिया रिएक्शन रो ना होची डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन गोटे वर्ड disproportionation reaction same element get oxidized and reduced yaku don't attempt to balance it unless you learn real logical methods ame sikhiba how to keep pore to balance it I will never ever ask you to go for hit and trial we will learn 3 methods now today one method and tomorrow
another method followed by other reactions, and then stoichiometry, more concept. One is oxidation number method, which we'll learn today. And for ionic equation, better is ion-electron method. It's not heat and trial method will do any purpose, solve any purpose. Not at all. And for ON, there is another powerful method. When ON, normal ON will fail, the bookkeeping, the calculation, you cannot do it mentally. Then there is another mathematical method called EBD method that belongs to ON. Electron balance diagram method. सेटा मध्य आमे शिखिबा EBD ର full form ହେଲା electron balance diagram. So ଚାଲ ଆମେ ଇଏ କରିବା ତାକୁ ଶିଖିବା ON method ଟା ଶିଖିବା balancing by ON method. सर प्रीवियस इक्वेशन टाको इक्वल करके देखिबे ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁନି କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତ ତମେ ଆନ୍ସର ଦବ କହିବି ତମେ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ମନା କରୁନି ତମେ ଠିକ କରିଛ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଚାରୁନି नहीं सर सेटा हेलानी बोली पचारली ନାଇଁ 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 କାହିଁକି ହେଲାନି ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବାଜିଗଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲାନି ବିକଜ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମାନେ ତୁମେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ କହିଦିଏ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ କହିଦିଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ऑर्गेनिक रे तुम सेटा फील करिवो इनऑर्गेनिक रे तुम फील करिवोनी ऑर्गेनिक पढ़िले जांगी फील करिवो जेते प्रकार रिएक्शन अछि दी प्रकार लक्ष्य प्रकार जो आमे जो करूचे से नुह गोटे होची रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन गोटे होची नॉन रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन कार गेन होवन कि न ताकू अमेरिकन लिटरेचर रे गोटे वर्ड बोरो करके यूज करे मेटाथेसिस गोटे वर्ड सो रिडॉक्स एंड मेटाथेसिस रिएक्शन दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज और जब तुम्हें अमेरिकन लिटरेचर फॉलो न करिवो रिडॉक्स एंड नॉन रिडॉक्स एटा तर एग्जांपल हमें देखि सारलेनी अनेक देखि सारलेनी ZnSO4 plus H2 मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल 0 रु गला +2 को हाइड्रोजन +1 रु 0 को एटा रिडॉक्स किंतु आमे जो आगुरु डबल डिस्प्लेसमेंट करूथुलु तर हमर लेड नाइट्रेट रे आमे NaCl पकेले आमे व्हाइट प्रेसिपिटेट PbCl2 पाइलु प्रेसिपिटेट हला NaNO3 हला आमे बैलेंस करू नै एटा हीट एंड ट्रायल मेथड रे बैलेंस करा जाय नॉन रिडॉक्स रिएक्शन मानकु हीट एंड ट्रायल मेथड रे बैलेंस करा जाए ताको मु कहे इंस्पेक्शन मेथड एठी कहार चेंज हेनी लेडटा +2 एठी अछि एठी भी अछि नाइट्रेट आयन एठी भी अछि सोडियम एठी भी अछि कौन सी चेंज कौन सी एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हेनी सो ना इलेक्ट्रॉन के लूज करछि कि गेन करछि तो एटा का नॉन रिडॉक्स ए माने आराम रे तुम जदी फार्मूला ठीक से लिखि दबो तबे तुम आराम रे गोटे मिनिट रे तबे हीट एंड ट्रायल मेथड रे कर दबो किंतु रिडॉक्स रिएक्शन एस ई बलिया सहजिया सेना कर दबो संग संग हीट एंड ट्रायल रे किंतु देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस तबे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन को समान प्रयोग पड़ी एमिति हीट एंड ट्रायल रे बेले बेले कोन हुए ना इक्वेशन बैलेंस हो जाए किंतु सेटा भूल आ गोटे कोएफिशिएंट दरकार आ गोटे सेट ऑफ कोएफिशिएंट दरकार दैट इज करेक्ट काहे ना इट विल cater to the number of total number of electrons lost by the reducing agent and the total number of electrons gained by the oxidizing agent समान करले जागरी बैलेंसिंग हबो नने हबनी सेटा हला ON मेथड एवं आयनिक इक्वेशन थिले तब आयन इलेक्ट फिलोसफी एका किंतु मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हमें ON मेथड रे करबा आ आयनिक इक्वेशन जे देथिबो डायरेक्टली आयनिक इक्वेशन देथिबो सको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे करबा ताको मध्य ON मेथड रे करि पारिबा किंतु आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ता बेसी डिपेंडेबल कारण बेले बेले असली चार्ज और फेक चार्ज भितर जदि टिके कंफ्यूजन हे जिवो त सब भूल बाले कहबी तेणु आमे रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन रो जो दी प्रकार रो बैलेंसिंग सिखिबा सेतरे सब तमर हे जिवो नॉन स्टोकियोमेट्री भी करि परिबनी आमे जाउजे स्टोकियोमेट्री को सॉल्यूशन को विभिन्न प्रकार जिंस को सो सेठी आमे एक रे ON मेथड रे
Owen method philosophy है equalize the total number of electron lost with total number of electron gained. Electrons कर दूँ electrons gained. सीटा ना तार मूला मंत्र. The philosophy behind this method is to equalize the total number of electrons lost with the total number of electrons gained. For example, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେସ୍ କହୁଛି. ଆମୋନିଆଟାକୁ ଯଦି ଏୟାର ରେ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ତମେ ହିଟ୍ କରିବ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାଟିନମ୍ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. ହିଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମିଳିବ NO ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର. এই ଇକ୍ୱେସନ୍ କୁ ତମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ କହିବୁ. ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମେଥଡ୍ ରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ମୁଣ୍ଡ ଆବୁ ହେଇଯିବ, ବେଳେ ବେଳେ ହବନି. ଏଇଟା ହେଇଯାଇପାରେ ଛୋଟଟା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଆବୁ ହେଇଯିବ, ସେ ହବନି. କିନ୍ତୁ यूं बाएं हाथ का खेल भलिया ହେଇଯିବ ଯଦି ତମେ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଗେନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ କୁ ସମାନ କରିବ. ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ଚୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଅକ୍ସିଜେନ. ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ବାହାର କର ଏକ୍ସ ମେଥଡ ରେ. କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନକୁ ମନ ଆଉ ଏକ୍ସ ମେଥଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନକୁ ମନ ଲେଖିଦବ. କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲଭର ଜଣେ ଲେଖିଲେଣି, ସାର୍ N Avasthi is basic book of securing top ranks in JEE Advanced. Which book to choose between N Avasthi and Neeraj Kumar to secure full out of full in JEE Advanced Physical Chemistry? So, chemistry lover 007, thank you very much for your question. I am honored that you are asking me this question. N Avasthi is a very good book, as well as the Neeraj Kumar book, but they are equally good. But the main thing, let me tell you, our students all over India, they are so obsessed. I use the term obsession. And the verb is obsessed, that they think that if a good book will be given to them, they can crack JEE Advanced or NEET, AIMS, directly AIMS, Delhi, from a book alone. Yes, book has definitely a role to play, but that is only 20 to 30%. But how you understand the basic concepts, the fundamentals from your guru, that is more important than the book. Book is a stereotype, shortcut. Methods are given in a very shortcut manner so that students can learn how to use them and get. But in advanced, even in main, many questions are coming based on thought provoking. Unless you understand the concepts thoroughly, no book will help you. No book will help you. So my advice to you, if you are a beginner in class 11 and you have the aspiration to crack JEE Advanced or NEET in a coveted institute like AIMS Medical, in different AIMS and the best AIMS in the country, and JEE Advanced or IJR, best institutes of the country, then you must understand the concepts thoroughly. Let me tell you this secret. A guy, I'm telling a long before, maybe 10, 15 years before, I was guiding him. I used to guide students for all these exams. And also I'm guiding now. What he did, he was telling me the secret. He was using only one book, because teachers like us, they are flooded with books. The Avasthi book, Neeraj Kumar book, all are given as complimentary copies. So I used to say, tell me which book you want, I will give all. He said, sir, gotiye bohi debe ki? Muta gotiye bohi deli. Se gotiye bohi underline kariki सब पढ़िला, पचारला, डाउट्स पचारले, कला से कला. गोटिए बही एवं अन्यान्य सोर्स रु सब क्वेश्चन आनला कला, फंडामेंटली स्ट्रांग हला, एंड ही
ता भलिया एपर्यंत कटक भुवनेश्वर एंटायर ओडिशा बहुत रेयरली ता भलिया पोजीशन रखिछन ही सिक्योर्ड 300 some odd AIR all India rank was 300 some odd secret was he was not after so many books a publication से publication किछि confusion हो जेते बही रखिबो सेते confusion हो गोटे भलो स्टैंडर्ड बही दरकार एवं आजकल तो इंटरनेट जुग एआई जुग जहाँ बस एआई 100% ठीक कहबो ता नुहे बट 99% चांस अछि ठीक कहबो तापर तुम गुरु अछंती सब मिसई कि तुम जानि परिबो सब डाउट एनीवे बैक टू पैविलियन के कहि परिबो यल ये सरसु कहलो both are good chemistry lover both are good Avasthi I appreciate maybe Avasthi has an age over Neeraj Kumar both are good I am diplomatic both are giving books to me I'm kidding अरे अंशु कह Yes, sir. Sir, nitrogen changes from -3 to +2. yes And it has oxidation yes, sir. how And oxygen changes from 0 to 2 minus. -2 जोड़ा सब Yes. फेक चार्ज जोड़ा सब -2 हला तेणु एटा हला एठी भी देई पारथांते किंतु ऑक्सीजन टा हाइड्रोजन नै करी एठी वाटर हे तेणु एठी देले जने पिला पचारला एठी देले कोन असुविधा अरे हां किछि असुविधा नै किंतु ऑक्सीजन टा हाइड्रोजन नै करी कंबाइन करके H2 हे तेणु एठी दबाटा मोर एप्रोप्रिएट देन एठी -2 दबाटा एटा पूरा छाडी देलो गोटे गोटे एंटायर सब्सटेंस को तमे छाडी देलो केमती it has undergone it has taken part in the change game electron loss and so सेई गोटा तेबे कोन टिके मन ध्यान देकरी सुनो इलेक्ट्रॉन लॉस को इलेक्ट्रॉन गेन संगे केमती समान करबा the one the change in oxidation number in Ra is becomes the coefficient of OA and vice versa ता अर्थटा कोन मु कहि दउची the change in oxidation number the total change let me write down total change the total change in oxidation number in Ra becomes the coefficient of OA and vice versa देखो एटा तो हला जोटा निजे ऑक्सीडाइज हला एटा हला Ra एटा हला OA Ra रे केते चेंज हला ऑक्सीडेशन नंबर -3 थला बैठी लिखली Ra -3 थला चेंज माने +2 को गला केते चेंज हला तार मोड नहीं जाओ चेंज इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर तार मोड नहीं जाओ 5 हाँ कि नहीं अरे -3 रु +2 टा चेंज केते हला 5 कि ना नहीं Yes, sir. एटी थला -3 एटा 0 एटी +2 so what is the change So 5. 5 take the mod only the magnitude part not the sign part जोठु तुम स्टार्ट करो एपटू नहीं थिले प्लस आस्थांता तो -3 रु स्टार्ट कली बोली माइनस आस्तिबो तो तार चेंज टेक द नंबर नॉट साइन सो जो से चेंज हला ताकू आ धेरे गुण कारण ये इलेक्ट्रॉन लॉस कला गोटे नाइट्रोजन 5टा इलेक्ट्रॉन लूज कले जांगरी तार 3टा थंट कटिबो जोड़े गात हबो आई थिंक आई एम now precipitating down to my colloquial language to access more to the students. Now -3 to +2 it has to lose 5 electrons. So the 5 has to be multiplied as coefficient here. I will tell you why. Because our purpose is to equalize the number of electrons lost and electrons gained. And tell me what is the change in oxidation number, total change in oxidation number of the OA के कोई परिवो OA रे केते चेंज हेछि Sir 2. 80 होगा खाई गलो टोटल चेंज ए एजेंट रे दीटा ऑक्सीजन एटम अछि यस गोटे पाई 0 रु गला
-2 -2 इटी 0 थिला इटी -2 गला गोटे पाई 0 रु -2 इंटू 2 दीटा ऑक्सीजन एटम अच्छी टोटल है केते ना 4 बुझेला केमती 4 है एठी नाइट्रोजन गोटे एटम थिला हाइड्रोजन रो किछि बजूत नाही से तार ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हेनी नाइट्रोजन जार ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इट इज ओनली 1 in number here also it is 1 in number तो such multiplication was not required but एठी ऑक्सीजन दीटा अछि गोटे ऑक्सीजन एटम रे चेंज इज 2 and hence there, for 2 oxygen atoms the total change is 4 के बुझिला हते को पद्मेश अछि well so 4 is to be multiplied with this one here फल कौन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गोटे नाइट्रोजन जब 5टा लॉस होता चारिटा नाइट्रोजन 4 5 20 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट एंड गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब चारिटा गोटे ऑक्सीजन एटम दीटा गेन होता दीटा ऑक्सीजन माने गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रे 4टा गेन हम सो 5टा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रे 5 20 5 4 20 सो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट 20 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड सो दैट इज द फिलॉसफी एटा कला परे हिट एंड ट्रायल देन बाई हाथ का खेल में हो जाएगा 4 नाइट्रोजन एटी अच्छी एटी 4 रे मल्टीप्लाई करिया पड़िबो एटी हाइड्रोजन जहाँ धर तमें हाइड्रोजन को धर कि ऑक्सीजन धर हाइड्रोजन 4 3 12 तेणु ये 6 कर दियो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाई थिबो एटी 5 2 10 एटी 4 + 6 10 देयर इज नो वे आउट जदि तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस को समान करिच बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल चेंज इन ON in one reagent with the other reagent then things will be a left hand I mean बाई हाथ का खेल बुझिला अंशु Yes, sir. एटा तुम हिट एंड ट्रायल मेथड रे करि पार तो केते समय लागि थान तुम एटा 4 दियो एटा 5 दियो एटा कोन दियो कोन एठी एलसीएम रो काम अछि ना कोन एटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस रो काम एठी कोन किछि काम तो बनी छोटो छोटो रिडॉक्स रिएक्शन हे जिवो किंतु ये भलिया अच्छा आ गोटे जीवा पूर्व तुम गोटे सर हम्म सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एटा को केमती करबा से करी डिस्प्रपोर्शनेशन रे एटा एप्लीकेबल होबनी सेटा हिट एंड ट्रायल रे हे जिवो सेटा जोटा होबनी ताकू ईबीडी मेथड सेति पय तो ईबीडी मेथड अछि KClO3 भलिया सहजिया ये रिएक्शन रे हां ई जो Cl2 ह सेठी तार एंटेना धरि छी एठी करवा एटा ईबीडी मेथड रे सिखेबी आज हे परिबो जदि हे परिबो न नाही सेटा ईबीडी मेथड रे किबा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे सेटा ON मेथड रे हे परिबो कारण GaOS हे आरे हला सेटा बतई डोंट वरी अच्छा गोटे गोटे कर दी जीवा काई ना तुम तो खाई नथिबो ना मु तो टिके खाउछि टिके कष्टिया देबी ना सहजिया देबी फर्स्ट ईयर दियो चलो तुम जदि कष्टिया नब तुम मते मते तुम दांत भांगी कर दियो कि गोटे बोन कोठु आनी कर दियो कैल्शियम फॉस्फेट बोन रे थाए ताकू बाली ता देरे पकाओ सिलिकॉन डाइऑक्साइड होची बाली सेतरे कोक पकाओ कार्बन कोइला कोक पके हिट करो सेतरु बाहरिबो कोन ना फास्फोरस एलिमेंट P4 एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहरिबो एवं सॉल्ट रही जिवो कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 एटा हला गोटे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस कार्बन मोनोऑक्साइड ना डाइऑक्साइड सॉरी मोनोऑक्साइड कहली किंतु लिखली वाह एटा की पचलला की कहला एटा ओ प्रभु वेरी गुड कीप इट अप आई लाइक दिस मु कहली कार्बन मोनोऑक्साइड कि लिखला को भूल रे स्लिप ऑफ पेन हेगला तुम संग संग धरिबो टू इज ह्यूमन भूल हवाटा प्रकृतिगत मनीषर भूल को जानी परिबा सेटा होची संस्कृतिगत भूल को सुधारिबा सेटा होची प्रगति तमर एडवांसमेंट हला मन रखिथा तीनटा जिंस भूल करिबाटा स्वाभाविक तमन जबरदस्ती भूल करियो कोन यदि भूल हे गला
तो किसी मन दुख करबोनी ह्यूमन टू अर्न इज ह्यूमन प्रकृतिगत जदि ହେଇଗଲା ଆଉ ଭୁଲ को जानी परिवाटा होची संस्कृति अपब्रिंगिंग संस्कृति तमर सच्चाई सच्चापन एवं भूल को सुधारिबा आउ न करिबा सेटा होची प्रगति दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अपलिफ्टमेंट the transcendence of the consciousness level okay এটা মতে কর দেখিবা আগ চোরকু ধর এটা লাস্ট আই প্রমিস আউ করিবানি ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲଭର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଲି ତାଙ୍କର ଆଇଡି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ଜିମେଲ ବା ଗୁଗୁଲ ଆଇଡି ତାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି केमिस्ट्री लवर 007 डैश E9N वाह कंग्रेचुलेशंस हमको किसी से लव तो करना पड़ेगा लाइफ में खुशी लाने के लिए हमको किसी ना किसी को हम लव करना 1 2 5 100 होल मैनकाइंड दैट इज द अल्टीमेट द नेचर द ट्रीज the plants, the insects, the animals, the air we breathe in, and the sun that makes our sustenance possible, the fire, the water, all these we have to love. एटा गोटे तमरा लास्ट तुमको दिया चैलेंज क्वेश्चन प्राइज क्वेश्चन ये गोटे प्राइज दिया जीवो मोर ये लेखिकी रखी बट हो किंतु हो टोटल चेंज अवश्य यहाँ करने पूर्व मुझे आउ दुईटा खंडे कर दिए समय ना बोली मुझे करऊनी काली करेबी आज जी कर मो फाइल देखिक पढ़ से फाइलटा पढ़ जी मजारे कर तुमको एम्बारास करी ना कहीं कल नहीं से दिन मुझे कहली मुझे भाभी राति सुधा अंशु अंशु मते कह सरला बोली आंसर पठाओ पठात कलानी तार अन्य किसी कारण कम थी ये थी इट्स नथिंग आम परीक्षा सरी आम मजा करवा ना ये नवा प्रभु आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग विथ प्लेजर सो डू व्हाट एवर जदि इच्छा होनी अटेंड करवानी जदि इच्छा होमें प्लेजर रे करवा जोटा न आस पचार मु तो इवन कौन इवन मोर बेटर हाफ सांगे मुझे जाए बेले बेले कौन वेडिंग सेरेमनी कि कौटी थाए आग जो टंग आसीगला माने मुझे देखे मोर पिला पिला माने कि कौन डाउट रे पड़ले से बसिक चेष्टा करे सल्व करने को जदि से एडवांस लेवल रो थिबो मोर कसिवा दरकार हम मु घर को आसिक कसिक दिए सरीगला तुम बैलेंस हो गला सर बैलेंस कर देछन अच्छा हाँ आउ नहीं आग बाहर कर चोर को धर एवं टोटल चेंज टोटल रिमेंबर टोटल आई रिपीट टोटल बाँ पटर डाण पट 4टा थाउ कि 100टा थाउ बाँ पटर करिया पड़ियो डाण पट हिट एंड ट्रायल ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाँ पटर जेटा थिबो तेरे गुणिया पड़ियो एटा डिफिकल्ट नुहे डिफिकल्ट आज कहलिनी इक्वेशन टा देखा जाउची विराट बड़ किंतु सहज एटा खाली मु कहि दउची गोटे चोर किए कहलो अरमान सर कार्बन गोटे आ गोटे फास्फोरस यस कार्बन गोटे चोर फॉस्फोरस आ गोटे चोर चोर माने कोन सतरे चोरी करछन माने धरा पडु नाहंती बोली लुचुचंती बोली हमकु आ जते बेले आ लुचिबेनी आ से चोर नो चोर माने लुचंती ये लुचुची हमकु ignorance is bliss because we are ignorant says they are appearing as thieves when we are knowledgeable then they are not thieves they are sadhus saints
तुमे तो जोटी पढ़िबो पढ़ुछ पढ़िबो करिबो किंतु तुमे गोटे काम कर एनसीईआरटी रो बहिर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 11 नहीं आस अच्छी आनी सारे अंशु ये समस्त कहूँ प्रभु एंड अदर्स एनसीईआरटी रो जो बही अच्छी 11th क्लास रो पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ बर्तमान मु पढ़ाऊँ पार्ट 2 रो प्रथम चैप्टर पार्ट 2 रो प्रथम चैप्टर जोटा दरकार पार्ट 1 टा आंची पार्ट 2 टा भी किण मो पाखे सेगुड़ा न थाए नने मु तुम दियंती सेटा बेसी पैसा नुह 150 टका 200 टका भीतर पड़ो पार्ट 2 टा किण ऑल ऑफ यू ऑल्सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ केवल मो ये जो कोर्स 9 डे कोर्स दरकार हम ता नुहे मोर दरकार हम सब तुम स्कूल कोचिंग बाबा ये मधुस्मिता साहू कौन करदेले ठीक कर सारे आर यू मधुस्मिता साहू और somebody else in the guise of मधुस्मिता साहू who are you आज ये भी ऋतुपल्ली मध्य कई जॉइन कलेनि किंतु जॉइन न करिकी पुणी हठात जॉइन कले विदाउट एनी रीजन मु 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 डिस्प्लीज हेबी नो डाउट आई एम ए टीचर एंड ह्यूमन बीइंग जमती गोटे आमर गीत अच्छी पल भर के लिए प्यार हम पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही मैं कहीं कहली पचे गोटे मिछ प्ली नहीं जाओ मु केबे कहबिनी मिछ प्ली नुह बोली पचे नहीं जाओ जमती सिद्धार्थ नेला बोली मत लगुच आई विश जदि प्रकृति देह खराब थाए आई प्रे दैट ही गेट्स स्पीडी रिकवरी फ्रॉम हिज एलिमेंट जिते आस जॉइन कर हाँ दैट यू कैन डू इन 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 यूट्यूब इज ए जनरल प्रॉपर्टी everybody can watch and I'll be happy the more people watch but in Zoom you have to be a student like because I try myself to be teacher like अंशुलिमा है गला कहला देखिबा खाली कोएफिशिएंट उडा को Sir, 2, 2 6. कोटा 6 एटा Sir, 6 SiO2. एटा Sir, 10 C. यस एटा Sir, then gote हाँ तापरे 10 CO and 6 CaSiO3. यस तमे कोन करिवो कला परे प्रभु तुम चेक करदेव भात हांडी जमी गोटे दाना तुम मम्मी आणिकी करती आई डोंट नो वेदर मम्मी करती कि डैडी करती कहूँ यूजुअली मम्मी इज द कुक yes 101% Madhusmita but you tell me whether you are Madhusmita or somebody else in the name of Madhusmita you are 100% right मुझे लिखी सारे देखुच तुम सागर यहाँ सामान हाँ कौन कहती भात हांडी जमी गोटे दाना नहीं चिपंती जानी एंटायर भात हो जाइए गाड़े मम्मी सेमती तुम चेक करमती ठीक अच्छे ना नहीं ऑक्सीजन कारण ऑक्सीजन टा बहुत जगह अच्छी एठी दीटा जगह एठी दीटा जगह सो एठी 4 2 जा 8 2 जा 10 एठी 6 2 जा 12 28 टा ऑक्सीजन बाँ पटे एठी 10 प्लस 36 18 6 3 जा 18 एठी हेला माने निश्चय ठीक है कारण ऑक्सीजन टा होची भात हांडी गोटे दाना मैंने मल्टीपल टाइम्स अच्छी सेटा जदि समान अच्छी सब गुड़ाक समान अच्छी देख मु कौन कली जो मैंने बुझीपार करपारन एपर्यंत बाई चान्स धरी पारन मुझे करी आज सभा सांग करी कैल्शियम किसी चेंज होनी फस्फरस ये +5 रु जाइए 0 सो गोटे फस्फरस आटम रे जदि चेंज है 5 ये किंतु दीटा फस्फरस अच्छी दीटा 2 सो टोटल चेंज है 10 सो 10 टा को मु रिड्यूसिंग एजेंट रे गुणिबी एटा ओए एटा आरए एटा ओए कारण +5 रु 0 को गला माने रिड्यूस करछि तेणु निजे ऑक्सीडेंट एटा 0 रु +2 को जाइछि इंक्रीज करछि तेणु एटा निजे रिडक्टेंट तेणु एठी मु 10 रे गुणिली कौन पाई ना गोटे फस्फरस को चेंज है 5 ए 4 को देखिबिनी एठी एजेंट रे केतटा अछि
दीटा अच्छी तेणु दीटा को 5 दुणे 10 5 2 जा 10 देन कार्बन 0 रु जाइए +2 तेणु 2 चेंज होइछि गोटे तो कार्बन अच्छी आउ कौन आ तो बेसी कार्बन ना ना 2 तेणु एठी मते गुणिया पड़ो कौन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे 2 तेणु एथिरे 10 कारण यार टोटाल चेंज हो 10 यार टोटाल 0 रु +2 गोटे तो कार्बन तेणु 2 2 एथिरे तो यार सो दैट मो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट केते हला जे एठी 10टा इलेक्ट्रॉन यू नो जो गेन हला दीटा फॉस्फरस पाई एठी 2 कर देले टोटाल 20टा इलेक्ट्रॉन गेन हला ये गोटे कार्बन जदि दीटा इलेक्ट्रॉन लूज करिछि तो 10टा कार्बन 10 दुणे 20टा इलेक्ट्रॉन लूज करिछि सो एटा हमर सेटा ठीक हे गला आउ किछि नै एठी 10 अछि माने एठी 10 कार्बन मोनोऑक्साइड एठी ऑलरेडी P4 अछि एठी 2 एठी 2 एठी 4 अछि अछि तेणु P4 रो कोएफिशिएंट किछि चेंज होबार नै आउ एठी सिलिकॉन जेहेतु एठी सिलिकॉन कैल्शियम जेहेतु 3 2 जा 6 है ये 6 करने को पड़ो कैल्शियम को सामान करने को जाकरी तेणु कला फल सिलिकॉन भी होगला 6 तेणु या भी 6 करने को पड़ो तापर देख ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो सारी बिकॉज तुम्हें असल जिनसटा को कर देइछ इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन को समान कर देइछ तेणु आउ भाबार ना लास्ट बट वन एलिमेंट को कला बेलू को लास्ट ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड तुम्हें खाली गोटे जिनस मु कहि पारलिनी सेटा होची एई जातिया जिनस स्पेक्टेटर मन को केमती तमे ये करिवो गोटे कहि देबे कि प्रभु यस सर सेटा हला माने एई चैप्टरटा पूरा सरी गला स्पेक्टेटर मन को केमती कैटर करिवो देखो तोर एई जोटा इक्वेशनटा मु दउथली एले एटा आपको आयनिक इक्वेशन करदेले कौन हम स्पेक्टेटर ना आराम हो मेथड अलग किंतु ओएन मलिकुलर इक्वेशन को बैलेंस कला माने तुमको स्पेक्टेटर मान को नवा पड़ो एक्सट्रा ऐड करा पड़ो तेणु जो कोफिशिएंट प्रथम आसो मॉडिफाई करा पड़ो कोफिशिएंट्स बेले बेले मॉडिफाइड हो जाए देख मु बुझे दूसरी ये जिंकटा 0 रु गला +2 चेंज है 2 तेणु तुम आराम रे 2 ये गुणिदेल ये आरे ये ओए गुणिदेल कि 2 रही 2 चेंज हम कारण स्पेक्टेटर मान नाइट्रिक एसिड रु ही स्पेक्टेटर नाइट्रेट आयन आस तेणु यही कोएफिशिएंट केवल कहापाई ना आपाई ये जो 2 है केवल हीरो मार्का N2O हाइड बीन ए आयोनिक इक्वेशन देन किसी दरकार नथिला तेणु ये देखीदेल नाइट्रोजेन 2टा अच्छी ये N2 अच्छी बास ये N2O रो कोएफिशिएंट चेंज हम ना कारण यही 2टा नाइट्रो हाँ तापर नाइट्रोजेन ये +5 ये आसला +1 चेंज केते हला +5 रु +1 केते चेंज हला अरे केते चेंज हला 4 4 एथरे गुणा हबो जिंक रे बस जिंक रो कोएफिशिएंट चेंज होबार नाही केवल नाइट्रिक एसिड रो कोएफिशिएंट चेंज कोन पई हबो ना बिकॉज ये नाइट्रेट आयन जो एक्स्ट्रा आसीबो ताकू नवा पाई ए 2 जगह रे चेंज हम केते चेंज हम कहबी किंतु ए जो 2 टा आ पाई ऑलरेडी अछि एठी जदि NO थांता त एठी 2 NO करतांत तापरे कथावार्ता एठी N2O अछि भाग्य भलो एठी किछि करियो पड़ियोनी एठी NO थांता जदि मॉडरेटली कंसंट्रेटेड यूज करतांत एठी डाइल्यूट यूज करछो एठी NO बाहर थांता एठी 2 करियो पड़तांता देन चलला गाड़ी 4टा Zn एठी 4 रे मल्टीप्लाई कलो फल रे ये बेकारिया लोक 4 दुणे 8 8 नाइट्रेट आयन सरप्लस राइट साइड रे अच्छी कौन करा जीवो सी तो नाइट्रिक एसिड ही दब तेणु 8 एक्स्ट्रा नाइट्रेट आयन जो आसला सेटा को दब किए नाइट्रिक एसिड तो यहीटा को मॉडिफिकेशन है ए दुईटा ए हीरो मार्का पाई ए 2 रहिबो एक्स्ट्रा 8 मिसिले केते हो एटा काटिबो एठी एठू 10 करिवो हेले से दीटा ये हीरो मार्का N2O दब बाकी 8टा ये स्पेक्टेटर मानकर खबर नब गला नाइट्रेट नाइट्रोजेन संख्या सामान हो गला खाली रहा हाइड्रोजेन 10 हाइड्रोजेन आउ कोटी हाइड्रोजेन ना तेणु ये 5 करदे हाइड्रोजेन संख्या सामान है तापर भात हांडी गोटे तुम ये कर सार मु ओम प्रकाश मधुस्मिता जगह से ओम प्रकाश गुड गुड इफ यू वांट दैट नो वेल तुम जदि नॉर्मल स्टूडेंट हिसाब से तुम ये कर देन यूट्यूब बढ़िया समस्ते बेनिफिट पाई पारे कि बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप एज स्टूडेंट टीचर एंड यू विल बी इंटरेस्टेड टू गेट माय हेल्प
देन जूम रे जॉइन करवा उचित एवं तुम्हें स्टूडेंट लाइक बिहेव करवा दरकार मु मध्य आई विल ट्राई टू बिहेव लाइक ए टीचर ओके देन ये जो चेंज ये जो ऑटोमेटिकली भात हांडी गोटे 10 3 10 3 जा 30 ऑक्सीजन एटी अच्छी 10 3 जा 30 एटी 3 2 जा 6 4 जा 24 प्लस एटी 1 प्लस एटी 5 ये भी 30 ऑटोमेटिक हो जाई बुझिल किए बुझिले हाथ टेक कहीं नाइट्रिक एसिड रो कोएफिशिएंट को मते चेंज करियो को पड़ला तार कोएफिशिएंट मॉडिफाई करियो पड़ला 2 जगह मु 10 कली 2 टा निहाती तमे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड काली शिखिबा सेतरे 2 रहिबो कारण हमर स्पेक्टेटर सेठी नाही से N2O दबो किंतु एठी 10 करियो पड़ला कारण हमको मॉलिक्यूलर इक्वेशन रे आउ 8 टा नाइट्रेट डाहण पटे जो अछि ताकू सेही नाइट्रिक एसिड ही दबो से करियो तापर हाइड्रोजन हम कर देले तो आज पाई एथिकी सो मु 101% वर्तन श्योर मु जो देवी गोटे फाइल से तुम जी अच्छी तुम प्रैक्टिस कर दो बाय बाय प्रणाम सर काली मु काली मु डिस्प्रोपोर्शनेशन रे केमती ईबीडी मेथड रे करा कहबी सब कहबी डोंट वरी यस कहबी सर तुम काई बस चिट बाय बाय प्रणाम सर मैं तुमको छाड़ने आग एमान को छाड़ली तापर तुमको छाड़ी स्टॉप शेयरिंग करी